So hello, namaste and welcome you back people to my channel Glow by Shruti. So if you are watching this video or you're on my channel for the first time, so welcome. And hi, my name is Shruti and you're watching Glow by Shruti. So in today's video I am trying to create a smoky eye effect. So I'll be doing a smoky eye tutorial. Smoky eyes is the easiest eye makeup you could do. और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि यू कैन कैरी इट एनीवेयर, मतलब कि रात को चाहे कोई पार्टी हो, बीट कोई शादी हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो, स्मोकी आइज इज़ लाइक हार्डली 5 minutes एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग. सो आई एम अ स्मोकी आई पर्सन ओनली. मतलब मुझे कट क्रीज या फिर नॉर्मल किसी भी मेकअप से ज़्यादा अच्छा स्मोकी आई लगता है. सो वाई नॉट अ वीडियो ऑन दिस एंड लेट्स शेयर हाउ आई डू इट एंड आई मेक श्योर कि मैं बहुत ही ईजी और कम स्टेप्स के साथ पूरा ट्यूटोरियल रखूँ. And I hope you guys really like it. So without wasting much time, let's get into the video and let's see how it's gonna be. As you all can see कि मैंने already अपना पूरा makeup कर रखा है. And to see how I got this look, please go and follow me on Instagram. And वहाँ पे I have posted a video on this look only. So वैसे तो I've done my पूरा makeup, but just to show you guys proper tutorial, I am again putting concealer on my eyes. Since आपने मेकअप कर रखा है, so of course I will put that on my under eye as well as upper eye both. And also the reason for doing this is कि अगर कोई भी while doing आई मेकअप कोई भी आई शेडो अगर गिरेगा, so that won't मतलब आपके बेस पे नहीं जाएगा और कोई भी निशान नहीं छोड़ेगा. सो अब जो भी आई शेडो फॉल होगा वो इस पाउडर के ऊपर फॉल होगा. सो बाद में व्हेन यू विल जस्ट डस्ट दिस ऑफ तो वो सारा उसके साथ निकल जाएगा एंड जो बेस है वो ख़राब नहीं होगा. आँखों के नीचे जो यहाँ पे हमें नहीं हटाना है अभी आँखों के ऊपर से भी हैव टू जस्ट डस्ट दिस ऑफ लाइक दिस कलर. सो ऑलमोस्ट जस्ट अ न्यू शेड एंड जस्ट पुट दैट ऑल ओवर योर आईज to give extra base and protection. So there are two ways of doing the smoky eyes. One is you can do it with any gel kajal or one is you can do it any eyeshadow. So मैं दोनों mix करके I'll make a tutorial. And okay, so first what we'll do is we'll take any color, like maybe I'm here taking a pinkish peachish to form my creases. So here I'm taking a blush instead. I will just warm up my creases like this. In this motion, just warm your creases like this and dust or clean this brush once and just smudge it all over like this on your creases. Make sure जो end का part है वो ढंग से जो है वो smudge हो गया, यहाँ पे कुछ भी dark ना हो. Take any black eyeshadow you have or just make sure it's not pigmented and it's matte. Dust the excess off and just put that on your lids like this. Make sure कि आपका जो ऊपर की जो creases आपने form करी है अभी उस कलर को वो touch ना करे, ये black color उसको. And just नीचे ही make sure you are creating this effect. And now with a circular motion, you guys can see it in a circular motion. Just do it like this, so कि एक blended color लगे and ऐसा ना लगे कि हमने कुछ अलग से लगा रखा है. So just do it like this. And जो बाहर का एरिया होता है वहाँ से make sure कि बाहर से हम इसको अंदर लेके आ रहे हैं like this. Try to make us see and just make sure कि ये चीज़ अंदर आ रही है ऐसे और ये बाहर को ना जाए. मतलब हमारी ये जो आईब्रो होती है इससे एक्सटेंड नहीं होना चाहिए कलर. So just take it inwards like this in a circular motion. Just make sure सारा जो कलर है properly blend हो रहा है and it's not stuck anywhere. So you can see कि it's not stuck and काफ़ी blend हो चुका है. So you see the difference over here. यहाँ पे मैंने अभी नहीं किया है. So here is the crease and यहाँ पे I have, यहाँ पे ऊपर इसका इफेक्ट भी आ रहा है हल्का सा जो इस कलर का है. and this shade is also coming.
Now we'll do the same on the other eye as well. ये थोड़ा और ब्लैक इफेक्ट लाइक इसको और डेप्थ देनी है और थोड़ा डीपन इफेक्ट देना है. सो जस्ट टेक एनी काजल, योर ब्लैक काजल, एंड टेक इट इन अ ब्रश. You just take it like this in a brush and create a line like this here. बिल्कुल जो आपकी आँखों का सेंटर होता है, बिल्कुल जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं उसकी एकदम लाइन पे. जस्ट मेक श्योर कि एक लाइन वहाँ पे आपने, यस, जस्ट थिन लाइन हियर. सो बेसिकली व्हाट इट डज इज, पहले यू मेक श्योर कि आपके पाउडर का बेस डालें. अगर आप डायरेक्ट काजल लगा देंगे तो कम ज़्यादातर क्या होता है कि आँखों के ऊपर छपना शुरू हो जाता है एंड गेट दोज लाइन्स जो अच्छी नहीं लगती हैं. सो पहले अगर एक पाउडर का बेस होगा विद अ ब्लैक आई शैडो, दैट विल हेल्प अ लॉट. नाउ टेक दैट सेम ब्रश, उसमें थोड़ा सा ब्लैक शैडो मिक्स अगेन एंड जस्ट स्मच योर काजल प्रॉपरली. थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा टू गेट दैट डेप्थ. सो जस्ट मेक श्योर यू आर डूइंग इट वेरी नाइसली. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस. ये थोड़ा ज़्यादा डीप और डेप्थ में आ गया है एंड दिस इज स्टिल लाइट. नाउ टू सेट दिस अगेन टेक दैट ब्लैक आई शैडो एंड जस्ट पुट दैट ऑल ओवर योर काजल. Now the finishing part is again take that color which you have taken to create the creases, dust the extra off and just do make the crease again. So guys, I've done the same on the other eye as well. Now you can see how it actually looks. So guys, this is it. It was a short and a quick tutorial on smoky eyes and I hope you guys really like it. So if you like this video, please do not forget to give it a thumbs up, subscribe to the channel and share it as much as possible. Stay tuned for more tutorials and videos coming up next. Till then, take care, stay safe and stay healthy. Keep watching.